You can hear me, right? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's move on to our numerical from yesterday. Let's do a quick recap. What we have to do, what we are provided is with there is a we have to design a depth for a bridge. Clear span of that bridge is 6 meters. Carriageway onto that bridge, we have to design it for 2 lane, which is 7.5 meters wide. Footpath, there is a footpath on either side, 1 meter on either side. That makes the width of the carriageway as 9.5 meters. Wearing coat, thickness of wearing coat on the slab is 80 mm, and width of bearing is 400 mm. M25 grade concrete and Fe415 steel. And the loading class is IRC class AA vehicle. So that is for heaviest loading available as per IRC. So first, now जैसे मैंने last time भी बताया था और कल भी बताया था, फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि what we have to do is we have, whenever you are designing anything, it's a bridge or a pavement for a road or a structure, you for each and every member there has to be some assumptions. आप कुछ assume करते हो, उसके उस assumption के आधार पे हम design करते हैं. Then we have to check for that particular assumption. अगर वो set हो जाता है, if our assumption clears the criteria, then we can move on. So that is what we are doing here. So first of all, you have to find depth of slab and effective span. Now there is or you don't have any other hint provided in the question, so you have to go with the assumption for depth of slab. So for this question, what we are going to do is, our assumption is that we have 80 mm depth for per meter of span, right, for highway bridges, bridge decks. So this particular bridge is 6 meter, the span of this bridge is 6 meters, so 80 into 6, this is 480 mm. Let's round it up to 500 mm, right? Then using 20 mm dia bars with a clear cover of 40 mm, you have to find D effective. How you are going to do that? To overall depth, which is 500 mm, minus 40, which is the clear cover, plus 10, which is the half of the diameter of bars we are going to use. That gives you 450 mm. Moving on. Now we assume now we have D effective depth on the basis of the assumption of overall depth. Now we are going to effective span. Now effective span, least of these two, clear span plus D effective, and D is center to center of bearing. So your mic, turn off your mic. Yeah. So A clear span plus D effective, that gives us 6.45 meters, and center to center of bearings, that gives us 6.4 meters. Least of both these least of A and B is 6.4. So 6.4 meter is going to be effective span. Prakash, turn off your mic. Prakash, mic बंद करो. Sir, slide visibility is not clear. Pardon? Slide visibility is not clear, sir. Slide. I think it's a issue. Yes, sir. It is blurred. Not visual. Not visible slide. Slide is not visible at all. Not clear, sir. I think. Okay, how to make it clear? An internet issue, or I don't know what. Yeah, It's maybe breaking, sir. But Breaking. I mean, okay. I think everyone is facing the same issue. Yes. Connectors are breaking, sir.
My voice is also breaking. No, sir. Voice is All clear. is clear. But your Voice is clear. Problem is with just with the slight visibility. okay, hold on. Don't know what I can do. It's But coming let's- like blur. Sir. So maybe you can stop presenting and again repress. Okay. Let me disconnect and I will be back. Hold on. Okay. What about now? It's clear now. It's clear. It's clear now? Okay. Yes, sir. Okay. So yeah. First of all, please turn off your mic. If you have question, then only turn on your mic. Otherwise, keep it on mute. So now we have effective span, which is 6.4 meters. So that's it. I'm sure, I'm hoping that all of you get it. If there is a question, please ask me. अगर कुछ अभी clear नहीं है, आप लोग पूछ सकते हो. हिंदी में repeat करना है, तो बोलो. हिंदी में repeat कर देते हैं. अगर I don't think इसमें कुछ repeat करने जैसा, but still no problem there. चलिए ठीक है. Now we have clear span and we have defective. Now what we have to do? Now we have to find out bending moment. Now the thing with bending moment in case of a bridge deck is, bridge deck के case में क्या है? जो live load है वो moving है. So you have to find bending moment separately for dead load and for live load. ठीक है? Dead load के लिए it's same as before, जैसा हमेशा होता है, WL square by 8. L you have already 6.4 meter. L की value आपने निकाल ली है. You need to find the value of the total weight W. How to find the value of W? Dead weight of slab plus dead weight or weight of wearing cord. अभी ये भी हमने last time निकाली थी. If अगर नहीं निकाली तो just like unit weight of concrete into the width of the section, or same is for your wearing cord. क्या आई थी W की value हमारी? Come on, now you can turn on your mic. You have to answer on your mic and tell me क्या value आई थी हमारी W की? 14.26. Okay, and now put this value in this expression WL square by 8, and what will you get? 73 point something, right? Yeah, 73.01. Yeah. So okay, that was your. With me it's 72 because मैंने इसमें concrete का unit weight 24 लिया है. So that is the difference. ठीक है ना? आपका 73.1 या 04 है. That is also correct. अभी this is what we have. This is the dead load.
this is bending moment because of dead load. Now we are talking about bending moment because of, now we have to find out bending moment because of live load. बेंडिंग मोमेंट बिकॉज ऑफ लाइव लोड में सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहली बात तो ये कि योर लाइव लोड इज मूविंग, तो आपको उसको इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा ओवर जिससे हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिले, ठीक है. सेकंड थिंग इज बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ योर लाइव लोड, we have to accommodate, we have to consider this movement, this dynamic aspect of the live load. In order to accommodate this dynamic aspect, हम क्या करेंगे, we need to magnify our live load with impact factor, ठीक है. हमें impact factor जो एक expression given है as per code, उससे हमें अपने live load को magnify करना पड़ेगा. Now in order to find out impact factor for class AA tracked vehicle load, उसके लिए क्या provision दिया हुआ है, 25% for 5 meter span, decreasing linearly to 10% for 9 meter span. You have to interpolate and हमारे पास 5 meter के लिए 25% है और then 9 meter के लिए हमारे पास 10% है और हमारा span, our span is of 6.4 meter. So you have to find it for 6.4 meter. So after interpolation, the answer is going to be 19.7%. आप सबको clear है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Again, after introducing this impact factor, किसी का कोई query है? Interpolation, I can't help you with interpolation. आप लोग अपने हिसाब से करिए, but this is how you are going to get your impact factor. Impact factor का concept समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Moving on. Now you have impact factor, and we have to find out bending moment due to live load. And I told you before that live load is going to move to be, and we have to arrange live load in such a way जिससे हमारे को maximum bending moment मिले, ठीक है. Now in this bridge deck, definitely you are going to get maximum bending moment when your live load is going to be in the very center of your deck, ठीक है ना. Now let's assume कि live load इस तरह से place किया कि it is in the very center of our bridge deck. Now you have to find L effective of load, ठीक है ना. L effective of load. What is L effective of load? Let me show you. ये जो आप figure देख रहे हैं जो code में given है, this figure is given in the code, right? Now this tank is moving on your deck, ठीक है. This is the same manner this tank is moving. This is 6.4 meters. This is one end of, let's say it's a stream. This is one end of a stream and this is another end of a stream. इसमें ये tank इस तरह से move कर रहा है. Because और यहाँ पे contact area हमारे को contact जो length है वो हमारे को given है track की, that is 3600 mm, right? I'm sure you can see. The contact length is provided 3600 mm, 3.6 meter. You have to find because of this 3.6 meter जो load transfer हो रहा है उससे कितना slab का इस point से आगे और इस point से यहाँ पर कितना area affect हो रहा है. That's what we have to find and that is what we call L effective of load. Right now we are talking about L effective of load. So how you are going to find it? इसका ये expression यहाँ पे given है. In the effect of contact of wheel or track load in the direction of span length is equal to the dimensions of tire contact area, which is 3.6 meters over the wearing surface plus twice the overlap of slab, which is 500 mm plus inclusive of the thickness of wearing cord, which is 0.08 meter in if you are converting in meter. तो उस केस में हमारे पास
एल इफेक्टिव क्या आ रहा है 4.76 मीटर। ये एक्सप्रेशन आप लोगों को क्लियर हुआ? एल इफेक्टिव क्या है और उसको फाइंड आउट करने के लिए कोड क्या कह रहा है, ये दोनों चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। आई एम रिपीटिंग इट वंस मोर। एल इफेक्टिव जो है दिस इज द स्पान ऑफ योर ब्रिज जो 6.4 मीटर है। वी आर प्लेसिंग, हम जो टैंक लेट्स से जो टैंक है हम उसको प्लेस कर, जो लोड है उसको प्लेस कर रहे हैं हम ऑन द वेरी सेंटर ऑफ योर ऑफ द स्पान ऑफ अवर ब्रिज। वो दोनों डायरेक्शन में, इस सेंटर से आगे और सेंटर से पीछे वो दैट इज गोइंग टू स्प्रेड, लोड जो है वो स्प्रेड होगा। अभी हमें ये पता करना है कॉन्टेक्ट एरिया इज ऑलरेडी गिवन, ट्रैक का कॉन्टेक्ट लेंथ इज गिवन विच इज 3.6 मीटर, वो ऑलरेडी गिवन है। और इस 3.6 मीटर से 700 किलो न्यूटन का लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एक ट्रैक से 350 किलो न्यूटन, दूसरे ट्रैक से 350 किलो न्यूटन। अभी ये 350 किलो न्यूटन लोड जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो कितना एरिया अफेक्ट कर रहा है, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। इस लेंथ से यहां तक और यहां तक का कितना टोटल स्लैब का लेंथ इस लोड से इफेक्ट हो रहा है, ये हमारे को फाइंड करना है। ठीक है, इसे फाइंड करने के लिए कोड में प्रोविजन है, प्रोविजन सेज एल इफेक्टिव लोड के लिए डायमेंशन टायर कॉन्टेक्ट एरिया ओवर द बियरिंग सरफेस which is 3.6 meter or 3600 mm plus twice the overall depth of slab inclusive of the thickness of bearing coat. So your slab thickness is 500 mm, तो यहाँ पर 0.5 meters हो गया, and your thickness of your bearing coat is 80 mm, so that 0.08 मीटर हो गया। इसका ट्वाइस करके इसको हमने उस जो हमारे को एज पर कोड जो कॉन्टेक्ट एरिया कॉन्टेक्ट लेंथ गिवन है उसमें ऐड किया, वी विल गेट 4.76 मीटर। ठीक है, सो नाउ वी हैव द लेंथ ऑफ दिस लोड, वी हैव इफेक्टिव लेंथ ऑफ दिस लोड विच इज 4.76 मीटर्स। फिर से पूछ रहा हूं, ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? यस सर। Yes. सबको क्लियर है? Yes, सौधन्या आपको क्लियर है? Yes, sir. ओके, नीरज गुप्ता, नीरज रावत, सर एक बार रिपीट कीजिएगा। Please repeat, sir. ओके फिर से रिपीट करता हूं मैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, ये समझो हम लोग क्या क्या व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, हम लोग क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका दिस फिगर इज फ्रॉम योर कोड, दिस फिगर इज फ्रॉम IRC। सो इस फिगर के एज पर दिस फिगर जो ये टैंक है जो कि 700 किलो न्यूटन लोड ट्रांसफर कर रहा है आपकी स्लैब के ऊपर, ठीक है, और कॉन्टेक्ट एरिया कितना है उस टैंक के ट्रैक का, और उसका लेंथ कितना है, उसका लेंथ यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है 3600 mm विच इज 3.6 मीटर्स, ये हमारे को पता है। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इज कि बिकॉज ऑफ दिस लेंथ एंड बिकॉज ऑफ दिस लोड स्लैब का कितना लेंथ अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है ना, स्लैब का कितना लेंथ अफेक्टेड हो रहा है ये हमारे को पता लगा है। ठीक है, जो स्लैब का लेंथ जितने ये इसको हमने यहाँ पर हाउ टू से, इसको यहाँ पर हमने अगर इसको ट्रांसफर किया तो कितना लेंथ आएगा स्लैब का, ठीक है ना। नाउ उसके लिए इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर एल इफेक्टिव जो कि इस टोटल लोड का लेंथ होगा, ठीक है, ये ट्रेन ऑफ लोड है, जो आपकी लोड ट्रेन है इसका लेंथ होगा, वो पता लगाने के लिए कोड क्या प्रोविजन दे रहा है, कोड कह रहा है द इफेक्ट ऑफ कांटेक्ट ऑफ व्हील और ट्रैक लोड इन द डायरेक्शन ऑफ स्पान लेंथ इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ टायर कांटेक्ट एरिया ओवर द वियरिंग सरफेस। टायर कांटेक्ट एरिया कितना है 3600 mm है, 3600 mm, तो यहाँ पर वो 3.6 मीटर हो गया, प्लस ट्वाइस द ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब की ओवरऑल डेप्थ प्लस उसका जो वियरिंग पोर्ट उसके ऊपर चढ़ा हुआ है उसको जोड़ा और उसका ट्वाइस करके इसके अंदर ऐड किया,
this is going to be L effective of load. ये आपका 4.76 meters आ रहा है in our case in this particular question. ठीक है, किसका क्वेश्चन था ये? प्रभात का, राइट? प्रभात, हेमंत? Yeah, sir. Yeah, understood, sir. Okay, so let's move on. So now you have this as 4.76 meter. We have L effective of load. What is L effective? अगर ये फिगर आपने बनाया है तो प्लीज मेंशन इट हियर. This L effective is the length of your load train, which is 4.76 meter now. Now you have it. अभी इस 4.76 मीटर के मीटर को कंसीडर करते हुए जो लोड की इंटेंसिटी अभी हम निकालेंगे, उससे हमारे को अपना बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, अभी लेंथ हमने निकाली, अब इफेक्टिव विड्थ की बात करते हैं. ठीक है, इफेक्टिव लेंथ आपने लोड की निकाल ली. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इफेक्टिव विड्थ ऑफ स्लैब परपेंडिकुलर टू स्पान. ठीक है ना, ये तो क्या है? दिस इज अलोंग द स्पान. आई टोल्ड यू ये स्पान है हमारा. यहाँ पर एक बैंक है स्ट्रीम का, यहाँ पर एक किनारा है स्ट्रीम का, राइट? दिस इज अवर स्पान and we already calculate this length, which is 4.76 meters. Now you have to find now you have to find the dimension which is perpendicular your span. ठीक है ना, effective width of slab perpendicular to span. इसके लिए ये एक्सप्रेशन है जो हमने लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था. ये एक्सप्रेशन है इसके लिए. This formula is given again. This formula is provided in the code. BE is equal to K into X bracket 1 minus X by L bracket close plus BW. ठीक है, this expression is given. अभी इसके अंदर क्या क्या BE तो हमें फाइंड करना है. K का वैल्यू, how you are going to get K का वैल्यू? K का वैल्यू you are going to get it from B by L. आपका विड्थ जो है, ब्रिज का जो विड्थ है हमारे डेक का, by L. That is how you are going to get the value of K. B by L करके आप IRC 21 में जाएंगे, वहां पर टेबल गिवन है. That table will give you the value of K. आप लोगों को आइडिया है कि ये टेबल गिवन है IRC में? किसी ने पढ़ा IRC 21? हाँ बोलिए, you know that? बोलो यार, किसी ने IRC 21 पढ़ने की कोशिश की? नहीं सर. नहीं की. ओके, तो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ K. अगर आपके पास अभी IRC 21 है तो प्लीज उसे खोल के एंड ट्राई टू फाइंड आउट दिस टेबल वेयर यू फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ K. चलिए, देन कम्स BW. हाउ टू फाइंड BW? इसके लिए भी ये प्रोविजन कोड में गिवन है और मैंने पहले बताया था. ये द सम ऑफ टायर कॉन्टेक्ट एरिया over the wearing coat of slab in the direction of the span and twice the overall depth of the slab inclusive of the thickness of wearing surface. ठीक है, पर इस केस में क्या है? This is for one track. This is for a single track. ठीक है ना, this BW is for, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ये प्रोफाइल है, ये इसका सेक्शन दे रखा है. इस केस में क्या है? If you look at this section, there are two tracks. This 700 kilo is distributed by two tracks to your deck. So, and this the width of this track is already given, which is 850 mm. ये सब कोड में given है. This the width of track is already available. जैसे यहाँ पर length of track available थी 3.6 meter, ऐसे ही width of track is available which is 850 mm. अगर ये clear नहीं हो, if you can't see it clearly, I am saying it again. The width of track provided in code is 850 mm. ठीक है ना? So BW is equal to 0.85 plus twice of the wearing code. That is what BW is. अभी exactly BW मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लोड है, बिकॉज ऑफ ये लोड एक्चुअली यहाँ पर स्लैब पर कितना असर डालेगा, ए पर्टिकुलर ट्रैक स्लैब पर. आपने ये तो फाइंड कर लिया कि
3.6 मीटर की वजह से 4.76 मीटर का जो हमारा लोड ट्रेन निकल रहा है, ठीक है ना। सेम अब ऑपोजिट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करेंगे। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब करेंगे तो नाउ वी हैव टू, एंड इन बिकॉज ऑफ दीज टू ट्रैक्स this is the formula 0.85, which is width of a track plus twice the depth of bearing chord, and that gives you 1.01 meters. The sum of the tire contact area over the wearing surface of slab in the direction of the span and twice the overall depth of the slab inclusive of the thickness of the wearing surface, that gives you 1.01 meter. ये वापस But क्लियर sir, हुआ आप लोगों को? Yeah, sir, please go overall on. depth add नहीं होगा क्या? What about the overall Pardon? depth? Twice of overall depth is written over there. Twice the overall depth of the slab. I think 2 into Yeah, yeah. 0.5. ये वो मैंने शायद no listen ये that is by mistake. इसमें आप सिर्फ इसी की डेप्थ कंसीडर करिए, ये शायद वहां से वहां कॉपी हो गया, right? Just add the depth of your wearing chord, not the overall depth of slab. ये उस पिछले वाले प्रोविजन के Repeat हो लिए, गया. Okay. ठीक है? Okay, fine. Fine. Okay, everybody else, do you get this? Yes, sir. Okay, Yes, okay. Whoever get this is fine. पर अगर कोई है जिससे अभी तक नहीं, if somebody has any confusion, please go on and ask me, so we can move on. Harish, you are clear about all this? Hello. Kaundinya, yeah, go on. Sir, a bit confused, sir, actually. I'm a bit confused. About this one or about previous one? This one. You understand what the previous one is all about? Yes, sir. The previous one, I understood it. And this one, I was getting a bit confused, sir, actually. Okay, hold on. So in previous one, what we did in previous one is that we try to find out that on our deck, how much area is going to be affected if a track of length 3.6 meter transferring the load of 700 kilonewton is moving on our slab. ठीक है ना? We try to find out how much area, how much length of our slab deck is going to be affected by this combination of track length and this along with this load. Understand? Yes, sir. Okay, and the answer comes out to be 4.76 meter. This is what it is. This is 4.76 meter. So what I'm trying to say is कि ये 700 किलोन्यूटन का जो लोड है वो इस 4.76 मीटर पे की लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ. Of course, ये लोड जो है that is distributed as an area, but right now we are just dealing with a section, so we are just trying to find out this particular length, जो कि कितना आया 4.76 मीटर. Now moving on, we have to find out effective width. कितना width, ये तो प्रोफाइल हो गया. Now we are talking about section. तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये 2 पॉइंट्स है, तो उसने कितना एरिया बिकॉज ऑफ these 2 tracks कितना लेंथ अब अफेक्ट हो रहा है. ठीक है ना? That is what we are trying to find when we are talking about BW. ठीक है? BW is for one particular track. ठीक है? BW is for one particular track. This one particular track is transferring 350 kilonewton load to your slab deck, and the width of this one particular track is 850 meters. Oh, sorry, mm, 850 mm. And this width and this arrangement is provided in the code. So अपने को इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं. Just have to go through this arrangement, and then you have to calculate this expression of BW. And as per code, the code says that in order to find out the value of BW, what you have to do is you have to add the width of your track plus 2 into twice the depth of our wearing chord. आपको ये expression given है. Just put the values in this expression and you will get the answer for BW.
So the answer for BW comes out to be 1.01 meter. अभी clear हुआ? Okay, sir. Okay. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अगर नहीं हुआ, okay, अभी भी थोड़ा confusion है, तो question होने के बाद हम इसको वापस डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है. Now you get BW की वैल्यू. Now put these values in BE and find out क्या आ रहा है. अभी इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है. Let me एक बार वापस इसको देखते हैं. Now we have the value of BW which is 1.01 meter. ठीक है. L you already have. What is L? 6.4 meters. ठीक है. K you have to find out. How to find out K? I told you, you have to find out first, find out B upon L. B कितना है? 9.5 meters, right? How much is B? This overall width is what? 7.5 meters plus 1 meter plus 1 meter. So that is 9.5 meters. ठीक है ना? That is the value of capital B. L is 6.4 meters. We have already calculated L. So कितना आ रहा है B by L का? अगर हम उसका कितना आ रहा है B by L किया तो 1.48. 1.48. Right. Now, if you have code, go into code, find this particular table and find the value of find the value of K in front of 1.48. If you don't have the code, I am giving you the value of K. The value of K is 2.84. Okay? The value of K is what? 2.84. Okay. अभी इसमें क्या बचता है? Now what is left is X. X क्या है? Anyone can tell me what is X in this expression? बताओ यार, कल ही इसके बारे में बात हुई है. Of course हुई है. Center to nearby support distance. Right. ये जो लोड ट्रेन है 4.76 मीटर का जो ये लोड ट्रेन है, इसका CG का नियरेस्ट एंड से डिस्टेंस, ठीक है, दैट इज व्हाट X इज. सबको क्लियर है? ये जो लोड ट्रेन हमने अभी इसका जिसका लेंथ हमने फाइंड आउट किया, इसका जो सेंटर है वो इसका CG होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. इससे नियरेस्ट कोई सा भी एंड ले लो, उसका डिस्टेंस, चाहे ये एंड हो चाहे ये एंड हो, ठीक है, दैट इज व्हाट X इज. तो इस केस में X की वैल्यू क्या होगी? 3.2 meters, right? 3.2 meters. So, But sir, ये जो लेंथ होगी वो 9.5 होनी चाहिए ना? It is perpendicular to the span. what is perpendicular to this? The cross section, the length we have find out was in the direction of the span, clear span, and this will be effective width will be the perpendicular to the direction of the span. No. What we find out before, the L, the effective length, that is Yes. effective length in case of the slab structure. आई बात समझ में? हाँ, तो ठीक clear है? span it was, no sir. सुनो यार, सुनो. ठीक है, that is for your slab structure. What we are trying to find out right now, we are just trying to find out कि कितना effective, उससे कितना effect हो रहा है, ठीक है ना? This is along the length of span, along the length of your span, along your span, ठीक है? This B is along span. एक बार इसका वैल्यू निकालो, I will show you कि ये BE exactly कहाँ यूज हो रहा है, then you will get the clear idea. ठीक है? Okay sir. Okay sir. Find out the value of BE and let me know. क्या है ऋषभ? BE की वैल्यू? It's a simple calculation. यार जल्दी करो. क्या आई BE value? Just say it into mic. Yeah, 5.55 or 5.56, right? Round figure में. So that is the value of BE, 5.56. ठीक है? सबका आ गया? चलिए, moving on. Now this is the value of BE. अच्छा, अभी ये क्वेश्चन किसका था? ऋषभ का था ना? ऋषभ, Yes, you sir. were confused, right? Yes sir. Okay, and you were saying that this
this value, this BE is not along this span. This value is along this span. That's what you are trying to say, right? Yes, it is perpendicular to the clear Yeah, right. ठीक है, बिल्कुल सही बोला. अभी ये 5.56 क्या है? ये जो 9.5 का आपका स्पान है, 9.5 मीटर्स का, हाँ, इसकी बात कर रहे हैं. इसमें आपका जो ट्रैक है, सपोज ये ट्रैक का एक जो ये मेरा एरो है ना, यहाँ पर एक ट्रैक चल रहा है, एक ट्रैक यहाँ चल रहा है, तो ये कितना अफेक्ट कर रहा है? इसका 5.56 मीटर अफेक्ट कर रहा है. यही तुम कह रहे थे? yes, एंड दैट इज द केस. ठीक है, ठीक है. अभी भी अब फिर से कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, सोच रहा हूँ. अभी क्लियर हो गया ना? Yes sir. Okay. So now that is the case. ठीक है, you have this value of BE which is 5.56 meters. Now this is the arrangement. ये arrangement है हमारे एक single lane के लिए. This arrangement is again from the code. हमें कुछ नहीं करना है. Safe distance clearance कितना है? C is equal to 1200 mm. ठीक है, C is equal to 1200 mm. यहाँ पर ये फुटपाथ का विड्थ कितना है? 1000 mm. 1000 plus 1200 plus 850 again 1200 again 850. ठीक है, और उसके बाद हमारा 5.5 कितना आया? 5.56. इसके बाद फ्रॉम दिस पॉइंट टू आगे जो दूसरी लेन में सेम टैंक खड़ा है, लेट्स अज्यूम दूसरी लेन में सेम टैंक खड़ा है, तो इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज 5.56 मीटर. अब मुझे बताओ कि हमारा टोटल ओवरऑल लेंथ कितना होगा? ओवरऑल लेंथ मतलब वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल लेन. कंफ्यूज हो? नहीं आया समझ में? ओके, श्योर. लेट मी ट्राई इट अगेन. हमने 5.56 मीटर का जो हमारे पास आया BE, दैट इज 5.56 मीटर. ठीक है, ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन है टैंक की एज पर कोड. जब हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, BE कैलकुलेट करेंगे, तो योर टैंक इज गोइंग टू बी लाइक दिस, एंड दिस फिगर इज शोइंग half of this figure is for just for a single lane. ठीक है ना? So what we have is a double lane, right? तो इस केस में क्या होगा? सेम का सेम, मतलब ऐसा ही ये टैंक यहाँ पे खड़ा हुआ है, 350 किलोन्यूटन यहाँ से, 350 किलोन्यूटन यहाँ से ट्रांसफर कर रहा है. अभी because of this BE, now we have to find net effective width of dispersion. माइक बंद करो यार, म्यूट करो प्लीज. कौंडिन्य, mute your mic. Mute your mic. हाँ. What we have to find now, what we have to find is net effective width of dispersion. Net effective width of dispersion क्या होगी? First of all, जो ये आपका effective width of slab perpendicular to span है, लिख लो आप इसको, इसका half of 5.56 meters. ठीक है, half of when you जब आप 5.56 meters का half करोगे, you are here, you are at this position. आगे का आपको इसमें ऐड करना होगा, आगे का जो भी लेंथ है, you have to add in this 5.56 by 2. And after doing this, please tell me क्या आ रहा है आपके आंसर? ऋषभ समझ में आया? ऋषभ, Yes sir. are you, I mean, are you clear what we are trying to find out right now? Yes sir. I am
I mean, are you really clear? कोई confusion हो तो you can ask me. If no, then it's very good. But if you have any confusion, just go on and ask me. You want me to repeat it once again? आप लोग चलो ऋषभ को समझ में आ गया. Otherwise, anybody else? You want me to repeat it once again? What we are trying to find out? Yes, sir. Please repeat. Okay. Okay. You need to understand when we are talking about effective width and when we are talking about जब हम effective width की बात कर रहे हैं, in the case of a bridge deck, effective width is the width of your slab affected by width of your slab around the point of contact of the vehicle to the slab deck. ये है हमारी effective width, ठीक है ना? चाहे वो effective length हो, जो कि ये हुई कितना 3.6 का हमारा कॉन्टेक्ट लेंथ था, बट ये लेंथ कितनी निकली 4.76 मीटर्स, ठीक है? या फिर अब लेंथ निकाली तो विड्थ भी निकालनी पड़ेगी, राइट? और विड्थ निकालने के लिए बिकॉज वी हैव 2 ट्रैक्स, तो विड्थ निकालने के लिए ये फॉर्मूला है. ओके, ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया? इसको कैसे निकाला वो समझ में आ गया. अभी जो वैल्यू आपकी आई इफेक्टिव विड्थ, दैट इज 5.56 मीटर्स, ठीक है? 5.56 meters. It is going to be from here. यहाँ से 5.56 meter हो गया. 5.56 meter पर आपको दूसरा टैंक खड़ा हुआ मिलेगा. जस्ट इमेजिन कि वहां पर एक सेकंड लेन है और सेकंड लेन में दूसरा टैंक खड़ा हुआ है, ठीक है ना? So now I want to find half of this overall dispersion along the width, ठीक है ना? मुझे अब पता लगा, I have to find out net effective width of dispersion. Net effective width of dispersion क्या होगा? In order to find out net effective width of dispersion, this is the arrangement. ये हमारा फुटपाथ हो गया, which is 1 meter wide. उसके बाद C जो safe clearance है, जो कि already given है as per code, this is 1.2 meters, ठीक है? Then 850 mm, then again 1.2 meters, then again 850 mm. और उसके बाद इस पॉइंट से, इसके सेंटर पॉइंट से 5.56 चल रहा है, तो ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो रहा है इस केस में. सो व्हाट यू हैव टू डू इज add up to this point and after that 5.56 divided by 2. ये एक बार आप करिए and give me the answer for that. क्या आ रहा है? And please be quick. 8.08. 8.08. 7.45. 7.455. 7.455 is your answer. Yes. ठीक है? अभी वापस मैं बोल रहा हूं 7.455. Let's move on to this figure. ये हमारा जो this is what we have. 7.5 meter is total width of a lane of 2 lanes, and 1 meter is the width of footpath on either side. ठीक है? अभी इस केस में यहां पर मैंने एक टैंक खड़ा किया which is 1.2 meters apart from this curve, और वो जो भी एरिया ले रहा है उसका अरेंजमेंट is given 850 mm, then 1.2 meters, then again a second track of 850 mm. ठीक है? एक सिंगल टैंक के खड़े होने से हमारा अभी कितना आया विड्थ? 7.45 मीटर्स, ठीक है ना? सिंगल टैंक अगर मैंने इस एंड पे खड़ा किया तो उससे 7.45 मीटर्स की विड्थ अफेक्ट हो रही है. आप लोग समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कि जहां पे टैंक खड़ा है, टैंक तो सिर्फ हाफ लेन में खड़ा है, बट इट इज नॉट अफेक्टिंग जस्ट दिस द हाफ पोर्शन, इट इज अफेक्टिंग ऑलमोस्ट द होल पेवमेंट. You are getting my point, what I'm trying to say? Yes, sir. And you have to exactly know okay, how much width of pavement is going to be affected by this load. That is what we are trying to find out when we are talking about net effective width of dispersion. Clear है सबको? Saudanya, it's clear? Yes, sir. Okay. So your net effective width of dispersion is 7.45 meters.
ठीक है? 7455. Pardon? 7455 mm. Same. Yeah, 7. mm or 7.45 meters. ठीक है ना? Now moving on. अभी हमारे पास अभी जो लाइव लोड है, which is 700 किलो न्यूटन, हमने परसेंटेज निकाला था. You have to magnify your live load by impact factor. That's what we do here. 700 into 1.197 is equal to 838 किलो न्यूटन. ये कोई ऐसा बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं था, so it is already done. 838 किलो न्यूटन. This is your load. 838 किलो न्यूटन is the load. Now what is the average intensity of load? ये तो क्या 838 किलो न्यूटन तो क्या हो गया? This is the point load. This 838 किलो न्यूटन is divided, is spread upon how much area? So that is your area. This is ये तो 4.76 meter you have already calculated, and now you have 7.45 meters the width. So you have to find intensity. 838 upon 4.76 into 7.45 कितना आ रहा है? लोड इंटेंसिटी क्या आ रही है हमारी? Twenty-three point six three 23.63 kilonewton per per meter meter. square. Per meter square. Kilonewton per meter, no? What? Intensity will be kilonewton per meter, no, sir? यार अभी एरिया कंसीडर किया ना आपने. Okay, आप okay. इसका यूनिट खुद निकालिए ना. Yes, ठीक है? yes, yes, yes. Right? So that Yes. is kilonewton per meter square. Yes. Now with again I am trying to repeat it. I am going to repeat it again. What this intensity means, because of this track and because of this track, because of both these tracks, the area, ये जब ट्रैक आपका मूव करेगा 6 मीटर स्पान पे, it is going to move from point A to point B. तो जिस भी पोजीशन पर ये ट्रैक होगा, उससे उस पर्टिकुलर ट्रैक का जो भी डायमेंशन है 3.6 by 850 एक ट्रैक है, 3.6 by 850 दूसरा ट्रैक. But how much area is going to be affected? क्या निकाल? How much area is going to be affected? 4.76 into 7.45 meters का जो एरिया है वो अफेक्ट होगा. और now you already have the load which is 700 kilonewton magnified to 838 kilonewton. तो इस ट्रैक के मूव करने से लोड इंटेंसिटी कितनी पड़ेगी? जहां जिस भी पोजीशन पर ये मूव करेगा वहां लोड इंटेंसिटी कितनी पड़ेगी? 23.6 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया आपको? This is for this load intensity you have to find moment. Bending moment आपको live load bending moment you have to find for this load intensity. You get the point why it is important and why we have to go through all this exercise? क्योंकि इसके बाद things are easy. So I am asking you, I am asking everybody. सबको समझ में आया? आकाश, दीपक, हरीश, हेमंत. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है. So now you have the intensity which is 23.61 and this is the arrangement. This is the arrangement for maximum bending moment. Can you find out? Simple strength of materials का question है. Definitely I am sure आप लोग निकाल सकते हो. Please find out the maximum bending moment. If this is the load arrangement, यहाँ पे आप अगर ये फिगर बनाया है तो प्लीज नोट 4.76 मीटर हियर और 4760 mm and along with the intensity which is 23.6 kilonewton per meter square. ठीक है? And please find out maximum bending moment in that case.
हो रहा है सबसे? Any development? हो गया? क्या है आंसर? So is it 179? 9 is part of it. 179 is part of. You have to find out the moment. Our reaction are to subtract the bending moment from RA, right? Yes, sir. I mean, there is RA here, Yes, which yes. is because of this hole. When you are to calculate moment, this minus half of, right? If we are going to this point, you have to Yeah, half of this. No. yeah. Right, sir. Right. Anybody? So 458. 458. How you Yeah. end up with 458? Who is saying 450? So Prabhat. Prabhat. Or who was saying 179? Yeah, same me. I'm only, sir. Okay, so in what you did with 179? उस 179 आपने? No, sir. 179. So I subtracted because it is of different directions. Okay, if you subtract, you end up with 458. सुनो, वापस सुनो. Yeah. I made a mistake. You made a mistake. You Yeah. get what mistake is there? Yeah, I got it. Okay. Rishabh? Rishabh, any answer from you? Rishabh is no more connected with us. Okay. क्या आया प्रभात? हरीश? So is it 113? Right. Yeah. Right. Anybody else? Except प्रभात, किसी को और को? दीपक, हेमंत, नीरज, सौंदन्य? No, sir, I'm doing it. Why is that? You don't know how to find a moment, or I mean, this is long and you can do it on after.
Sir, it's 110. It's coming, sir. Listen, मैं आपको bending moment निकालना नहीं सिखा सकता, but I am going to explain how I am just going to explain it how to do. This is your 4.76 meter is given and density is 23.6, right? So up 23.6 kilonewton per meter square. You can, so this is your, you can say this is your UDL, uniformly distributed load, which is acting on the very much center of span, which is 3.2 meters. ठीक है? अभी because of this load, because of the symmetry and because of this load, RA and RB is going to be same. Reaction at A and B is going to be same. Reaction निकाल लिया आपने, होगा, ठीक है ना? ये जो भी load आ रहा है, इसका half यहाँ पे, half यहाँ पे होगा. That's it. Now you have to find out moment, maximum bending moment. So let's say in order to find out bending maximum bending moment, or maximum bending moment is going to be at the center, ठीक है ना? So we are just, because of the symmetry, we are just considering half of this span. Let's say it's a beam, we are just considering half of this beam, ठीक है ना? Now in order to find out maximum bending moment, क्या करेंगे? RA is going to be, you have to multiply RA by 3.2 meter. तो यहाँ पर इसका मोमेंट आएगा, ठीक है? Then minus, because coming from upwards and this is coming from downwards, so there is going to be a sign difference. So minus, and only half of this 4.76 meter is acting on this half of the span, ठीक है? So minus, you have to find out this जो इसकी intensity you have to find out, and you have to multiply this intensity with remaining half of the distance. So it's like 0.25 into 4.76. Then only you can find the maximum bending moment, which is 113 kilonewton meter. Okay, sir. ठीक है? ये तो, this is the process. Now you have to put the values and you have to calculate it on your own. So that is going to be 113 kilonewton meter. Now you have bending moment because of live load. We have already calculated bending moment because of dead load. So how much? So just add it on and find out total bending moment. How much is total bending moment? And please be quick about it. 186. 186 kilonewton meter. That is. This is going to be our total design bending moment. Now, after design bending moment, you have to find shear due to the same load. We have to find shear. ठीक है ना? ये तो सब, अब ये same process we have to do for shear. Just arrangement is going to change. ठीक है ना? Arrangement of load is going to change. Bending moment के लिए load center में था. In order to find out shear, definitely load या तो आप यहाँ पे move करा दीजिए इस end पे, या इस end पे move करा दीजिए. ठीक कह रहा हूँ ना मैं? Shear force, that is how you are going to find out shear force. सही बोला ना भैया? shear center में क्या होगा? shear, how much shear is going to be at the center? यार आप shear का डायग्राम, सॉरी, अगर आप बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाओगे, that is going to be a parabola. That is going to be a parabola or not? Sure. Yes. So in that case, this is, if there is this point is going to be have maximum bending moment, तो shear क्या होगा यहाँ पे? Zero होगा या नहीं होगा? Yes. Yes, sir. Right? So if shear center में zero होगा, तो as you move towards the end, shear is going to increase. यार ये तो बहुत basic engineering है, please. So in order to find out maximum shear, जैसे हमने maximum bending moment find किया, you have to move your load train either to this end or to this end. ठीक है ना? That arrangement is going to give you maximum shear. So let's move on. Now there you have it. For maximum shear, the load placement shall be like this. ये हमने 4.76 मीटर को मूव कर दिया इस एंड पे, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है ना? सो अभी इसको यहाँ मूव कर दिया. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू बीई फाइंड आउट करनी है. BW की वैल्यू सेम है, ठीक है? सेम BW की वैल्यू रहेगी.
K की वैल्यू सेम रहेगी, L is of course going to be same. What is going to change? X is going to change. ठीक है ना, यहाँ पर X कितना था, इसका CG का डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड कितना था 3.2 मीटर. अभी यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये जो इसका CG है, ठीक है, इसका CG इसके सेंटर में है, वहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा भैया, ये 4.76 मीटर इसका लेंथ है, तो यहाँ से इसके सेंटर से ये एंड का डिस्टेंस कितना होगा 0.38. पार्डन 2.38 meters. 2.38 meters, ठीक है ना. So this is the value of X. Now put all these value and find out the value of BE, effective width of dispersion. Now this effective width of dispersion is for shear, not for bending moment, ठीक है ना. So how much it is going to be? कितना होगा? कितना है BE की वैल्यू? Good morning, sir. यार, what's taking so long? BW you already have. X आपको पता चल गया, how much X is going to be 2.38. L is there, K की वैल्यू is there, 2.84. कितना होगा BE की वैल्यू? हरीश, हरीश, how much is BE, Harish? Sir, I am not able to listening, sir. Here noise is there. That is why. You are not able to hear me. Problem is at my end, sir. Noise is there. Okay. Hemant. Hemant. Nobody, what, you are not doing calculation or what? Prabhat. Prabhat. So 62 point
Wait a minute, sir. Let me once check. Wait, sir. I'm telling. I'm not getting you. How come you are not able to calculate this? कैसे Sir, नहीं हो पा रहा है? Pardon? sir, this L is 6.4, right? L is 6.4, right? 4 star. 6.4, 6.4 star. 5.21, sir. 5.21. Okay. 5.21 meter is the effective width of dispersion when it comes to shear. ठीक है? So now apply this, जैसे पहले हमने width of dispersion निकालने के लिए जो भी addition किए थे, do the same thing. Just this time you have to like 5.21 by 2 करके you have to do the same calculation and find out overall width of dispersion. It is going to be the same arrangement, but just last time it was 5.56 by 2. This time it is going to be 5.21 by 2. That is the only difference. तो shear के लिए जो आपका effective width of dispersion होगा, it is going to be slightly less as compared to width of dispersion for bending moment. ठीक है ना? तो please find out the width of dispersion and please do it fast. And anyone can tell, can anyone please let me know how to use this marker option, where I can find this marker option. किसी को है idea? Sir, 7.70. It's not 7.70, but it's 7.3 meters. But okay. कुछ हो गया होगा आगे पीछे कुछ कैलकुलेशन में there is कुछ discrepancy रह गई होगी, but no issues. But yeah, you are in the ballpark, no problem there. Now you have width of dispersion. After having width of dispersion, you have to go through the same process. Find out average intensity, then find out shear force, and then find out dead load shear force, और उसको add करके you will get design shear force. So I am okay. The width of dispersion is going to be 7.3 meters. Just note it down. आप लिख लो इस चीज को, उसको calculate बाद में करना. 7.3 meters is going to be width of dispersion. ठीक है? Now with this 7.3 meters, find out average intensity of load. Load तो same ही रहने का है. ठीक है? Load train का length भी same रहने का है, which is 4.76 meter. Only change is the width. So just put this 7.3 meters and find out the load intensity. क्या है load intensity? We have only 7 participants. What's wrong? I mean, everybody's hard on internet, or I'm just losing my pupils. What is happening? 24.11, sir. 24.1 kilonewton per meter square. So the intensity is slightly less. 24.26. Okay. How much? 24.26. Yes, sir. Okay, no issues. So it's 24.1 kilonewton per meter square. Now you have average intensity. जो same process, ये आपका arrangement है, यहाँ पर 24.1 या जो भी आपका आया, that is going to be here. And you have to find, now you have to find shear force. वैसे ही RB find करके you have to find shear force. Okay, shear force अगर find करना नहीं आता है तो मेरे को लगता है उसके लिए कोई you have to attend something else. वापस से या तो इसके
I can tell you how to find shear force, but it's a very long. I mean, यहाँ पर मैं process बता भी दूंगा. If you don't have the grasp of the concept, you are unable to find out. So please go to book of strength of materials and try to find out the shear force and bending moment on your own. मैं अभी यहाँ पे value बता देता हूँ आपको shear force की. Value of shear force is going to be 72 kilonewton. ठीक है? That is going to be the value of shear force. Bending moment is 103. Total design bending moment is 185 kilonewton meter. Shear force का value for live load is 72 kilonewton. For dead load, shear force is already मैंने expression दे रखा है. W into L by 2. As simple as that. W is 14 into 6.4 by 2. So how much it is? 45 kilonewton, and total design shear force is going to be 117 kilonewton. ठीक है? Total design shear force is going to be 117 kilonewton. सबने नोट कर लिया इसको? मैं फिर से बोल रहा हूँ. Shear force की वैल्यू प्लीज नोट डाउन. 72 kilonewton. Dead load shear force is going to be 45 kilonewton, and total design force is going to be the addition of both, and which is 117 kilonewton. ये आपका total design shear force आ गया, total design bending moment आ गया. अभी आपको इस bending moment और shear force के basis पे you have to design the reinforcement for your slab. But before designing reinforcement of your slab, you have to check whether the depth assumed by us is correct or not. जो हमने depth assume की है starting में, which is D effective is 450 mm. ये sufficient है या नहीं है? First of all, we have to check that. So moving on, now we are moving into design phase. अभी analysis कर रहे थे, अभी हम design phase में. Design of deck slab. सबसे पहले ये okay, this we are designing this slab as per working stress method. So working stress method के case में you can find these values. You can also find these values from IRC 21. These values are given. Permissible stresses when it comes to bending, it's 8.33 Newton per mm square. In tension, it's going to be 200 Newton per mm square. Value for M is 10, J is 0.9 and Q is 1.1. ये values given है, और I'm sure आप इस सबसे aware होगे. What is M, what is J, lever arm क्या होता है, ठीक है ना? So along with all these values, you have to check for D effective, ठीक है ना? Effective depth. So we are going to find out effective depth required. Moment upon Q into B. ये Q हो गया. B is always going to be 1 meter or 1000 mm. उसका under root करो and give me the answer. क्या आ रहा है हमारा D effective required? Moment कितना है? 185 kilonewton meter. So 185 kilonewton meter. Now this is kilonewton meter, right? And upon Q is 1.1, it is unitless, but B is 1000 mm. So you have to do the conversion. क्या आ रहा है भैया? D effective required. नीरज गुप्ता. नीरज गुप्ता. नीरज. Neeraj, can you hear me or not? Yes, sir. Okay. So no, I am not talking about Neeraj Rawat. I am talking about Neeraj Gupta. Neeraj Rawat is vocal from time to time, but I never heard anything from Neeraj Gupta. Neeraj Gupta, can you hear me or not? सुन पा रहे हो या नहीं सुन पा रहे? Okay. नीरज रावत. Yes, sir. आपका आया आंसर डी इफेक्टिव का? सर निकाल रहा हूँ. ओके, कैसे निकाल रहे हो मुझे बताओ. एम का वैल्यू क्या रखा आपने? बोलो बोलो क्या रखा एम का वैल्यू?
Thank you. मोमेंट का वैल्यू क्या रखा है यार? डिजाइन मोमेंट अभी हमने कैलकुलेट किया ना, वही तो रखना है. हाउ मच इज 180 changes. 180. 185, sir. 185 into 10 raised to power 6 because you have to change it to Newton mm. No? अच्छा ठीक है, मत करो आप इसको मत चेंज करो. 185 अपॉन Q करके बताओ मेरे को क्या आ रहा है. ठीक है, नो इश्यूज देयर. जस्ट यूज 185 divided by Q. Point 12.79. Pardon? $12.96. 12.96. अभी 12.96 is what? Meter or mm? Meters. Yes, meters. Yeah. This is you. आप ऐसे नहीं, you can't do it like that because Q is 1.1, right? And Q is this value of m, j, and q that comes from unit which is Newton per mm square. ठीक है ना? So okay, what you have to do is 185 into 10 raised to power 6. ठीक है? 185 into 10 raised to power 6, that is going to change 185 kilonewton meter into Newton mm. Okay, then divided by 1.1 into 1000 mm, which is your width, and then give me the answer. Hello, sir. 185. Yeah. Sir, once can you tell me the B value, sir? The small b value. Pardon? क्या कह रहे हो? What are you trying to say? Sir, the On m the- value, sir, the m value is 185, no, so 185.10.6 after converting by Yeah, by 1.1. I'm confusing about B value, sir, actually. Okay, B. Okay, listen. B is always going to be 1000. Okay, okay. Okay. Sir. Okay. B is going to be 1 meter. We are just calculating all for 1 meter wide span. That's it. So it's always going to be 1000 mm. Okay, sir. So how much is it? How much is it? So we're doing this, sir. Pardon? Doing, sir. Doing. Okay. Sir, 410.099. Right. 410. 0.099. So this is the defective which is required, or we are providing 450 mm. So our assumption is fine. ठीक है ना? Depth. So our assumption is fine. We can move on now. अभी हमारे पास depth आ गई. Now you can find out area of steel. Then area of steel for distribution moment. And then after that, you have to go for check for shear. This is how you do things. But what I'm trying to say is that up till this point, जो हमने depth assume किया था starting में, that depth is enough. It is not much than depth defective required, and it is not less. So we can go with 500 mm overall depth. ठीक है? चलिए. So I'm sure अभी यहाँ तक का आपको समझ में आ गया हो. That's it for today.
Okay, sir. Okay. ठीक है? Yes, प्लीज sir. इसको वापस करिएगा, सुनिए मेरी बात, जो प्रेजेंट है यहाँ पर राइट नाउ, जो है प्लीज इस चीज को, इस न्यूमेरिकल को प्लीज गो थ्रू दिस न्यूमेरिकल वंस मोर. Yes, sir. Yes, sir. We'll do it. Okay, wait. When you reach to this point, D effective required, after finding D effective required, you have to find area of steel in tension. So please find out area of steel in tension as per working stress method. There is a difference when I am saying working stress method, because limit state method का process अलग है, working stress method का process अलग है. तो आप area of steel in tension please try to find out. ठीक है? And that's it for today. या तो फिर इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के लिए, इस पर्टिकुलर इसके लिए we have to go for some extra class in order ताकि सबको समझ में आ जाए. ठीक है ना? And please try to work on your bending moment and shear force diagrams. Please try to work on it. अगर ये नहीं कर पाओगे तो ठीक है, manual analysis is not going to be possible. ठीक है ना? चलिए, good night. Thank you, sir. Good night, sir. Hello, sir. Yeah, please go on. Sir, why we are doing working stress method, sir? Why we are doing working stress method? Because अभी इसी साल I think 2021 और 2020 में IS code introduce limit state method for bridge design. ठीक है? But that is just in a draft form. That is just in a draft form. This it is not yet how to say, अभी तक उसको approval नहीं मिला है. समझ रहे हो? So when you are talking about bridges, dams, roads, railway bridges, anything other than frame structure, you have to go for working stress method. Okay, sir. Okay. Right? Because Okay. this is the law. You can say this is the law. ठीक है ना? Okay, sir. Okay. I understood. Okay. Okay, sir. Okay. Good night all. Good night, sir.